Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach special syllogistic rules of figure 2. Before start the session, please subscribe my channel, and if you have any doubt, any question in your mind, please ask me by comments. Let's discuss special syllogistic rule of figure 2. There are 3 rules in special syllogistic rule of figure 2. The rules are: the major premise must be universal. Second, one of the premises must be negative. Third, the conclusion must be always negative. These are the rules. We will prove one by one. This is figure 2. I draw the figure. Here is middle term, and it is the place of major term P. It is the place of minor term S, and it is conclusion. Conclusion is S is the minor term and P is the major term. It is like the English letter D. And here I have written the rules. Rules 1, major premise universal. Rule 2, one of the premises negative and conclusion must be negative. These are the 3 rules. I will prove one by one. There are 4 valid modes in figure 2. They are chemistry, Cesare, Barocco and Festino. I have written these 4 valid modes in figure 2. They are chemistry, Cesare, Barocco and Festino. Here in chemistry, this is for major premise, E for minor premise and E for conclusion. Then Cesare, E proposition is for major premise, A proposition for minor premise and E proposition for conclusion. Then Barocco, A proposition for major premise, O proposition for minor premise and O proposition for conclusion. Then Festino, then first proposition E proposition, it is for major premise and it is for minor premise I, and conclusion is O proposition, it is for conclusion. So these are the 4 valid modes in figure 2. एठी हमें देखिले ये 4टी valid mode. The major premise सबु गुड़िक एगुड़ा सबु गुड़िक A E गुड़िक सबु यूनिवर्सल होइछि. A universal proposition, E A E all are universal proposition. Common rules, these are universal proposition. So rule 1, major premise must be universal. Then second rule, one of the premise must be negative. That means from major premise and minor premise one of the premise negative. एठी हमें नोटिस करिबा एठी A एठी E A major premise minor premise major premise minor premise major premise minor premise major premise minor premise. आ भितर कॉमन कोन अछि? कॉमन अछि जे आ भितरु जोउटा हले गोटे नेगेटिव अछि. ए भितरु ई टा नेगेटिव अछि. ई ए एठी ई मध्ये नेगेटिव अछि. बोकाडो ए ओ प्रपोजिशन नेगेटिव. देन फेस्टिनो major premise E and minor premise I. एठी E proposition major premise negative अछि. That means according to rule one of the premise must be negative. दुईटी premise भितर गोटे निश्चित भाव में negative हबो. Then conclusion must be negative. देखिबा conclusion negative अछि ना नहीं. Figure valid mode of figure 2. Conclusion chemistry रो E अछि, Cesare रो E अछि, बोकाडो रो O अछि and Festino रो मध्य O अछि. E O proposition नहीं कि conclusion है. E proposition universal negative and O proposition particular negative. That means here common is negative. That means the conclusion must be negative. Now I am going to prove one by one. From the rules, first rule, major premise must be universal. This is major premise must be universal. It is the rule. If the major premise is not universal, let it be particular. That means एटा को हमें particular नबा. एटा assume करिबा this is particular. Particular जदि हमें नौचंती ताले देखिबा particular proposition distribute their subject or predicate.
दिस इज आम एज्यूम करवा दिस इज पर्टिकुलर यूनिवर्सल नबानी इफ इट इज पर्टिकुलर देन इज इट डिस्ट्रीब्यूट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर्टिकुलर प्रपोजिशन डजंट डिस्ट्रीब्यूट देयर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिस इज मेजर टर्म टी डिस्ट्रीब्यूट है ना जेहेतु एटा पर्टिकुलर प्रपोजिशन यूनिवर्सल प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूटेड देयर subject but particular proposition doesn't distributed their subject that means this major term is not distributed जदि मेजर टर्म टी प्रेमिस रे डिस्ट्रीब्यूट है नहीं तेणु आम देखा जे कंक्लूजन भी डिस्ट्रीब्यूट न हवा दरकार मेजर टर्म टी ये अच्छी मेजर टर्म ये भी डिस्ट्रीब्यूट न हवा दरकार ताले न जदि न हवा ये आम प्रपोजिशनटा कौन नवा ना अफर्मेटिव नवा कारण जदि नेगेटिव नौचंती नेगेटिव प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूटेड देयर प्रेडिकेट दैट मीन्स इट मस्ट बी अफर्मेटिव कंक्लूजन इज अफर्मेटिव आ जदि एटा न होची डिस्ट्रीब्यूट हो जाउची नेगेटिव नवा ताले फालासी ऑफ इलिसिट मेजर हो जिवो तेणु कंक्लूजन टी नेगेटिव हबनी अफर्मेटिव हबो यदि अफर्मेटिव हला ताले ये प्रेडिकेट मध्ये डिस्ट्रीब्यूट हला नाही देन वी विल गो टू मिडिल टर्म टी डिस्ट्रीब्यूट हेछि ना नाही मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वन here conclusion is affirmative that means what will be the premises from two if two premises are affirmative then conclusion must be affirmative that means here the major premise is affirmative and minor premise also affirmative then only conclusion be affirmative then both the premise affirmative and conclusion affirmative এই पर्टिकुलरटा को सेटा मन भूली जिबा वर्तमान दुईटा प्रेमिस अफर्मेटिव रहिला एंड कंक्लूजन आल्सो अफर्मेटिव रहिला अफर्मेटिव प्रपोजिशन एटी मिडिल टर्म टी प्रेडिकेट प्लेस रे अछि एठी मध्य माइनर प्रेमिस रे मिडिल टर्म टी प्रेडिकेट प्लेस रे अछि अफर्मेटिव प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट देयर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट we know negative proposition distributed their predicate that means middle term is not distributed in both the premise मिडिल टर्म टी डिस्ट्रीब्यूट है नाही जेहेतु एटा अफर्मेटिव प्रपोजिशन हला प्रेमिस ताले मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट हला नाही दैट मीन्स इट अराइज फालासी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल सो मेजर प्रेमिस मस्ट बी यूनिवर्सल जदि आम पर्टिकुलर नेबा फालासी अराइज होची तेणु अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेजर प्रेमिस मस्ट बी यूनिवर्सल इट इज प्रूव्ड देन सेकेंड रूल वन ऑफ द प्रेमिस नेगेटिव दैट मीन्स मेजर प्रेमिस एवं माइनर प्रेमिस भितर दीटाक भितर गोटे नेगेटिव हवा दरकार गोटे नेगेटिव हवा दरकार ये आम एज्यूम करवा जे गोटे प्रेमिस आम अफर्मेटिव नवाई जदि आम गोटे प्रेमिस अफर्मेटिव नौचंती ताले नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन देन इफ the premise is affirmative both the premise then conclusion is must be affirmative according to the general syllogistic rule the affirmative दीटांग हला ताले middle term distribute हला नाही कारण negative proposition distributed their predicate affirmative proposition doesn't distributed their predicate जगह कौन अछि ना middle term so middle term must be distributed at least one किंतु middle term टी distribute एठी हलानी माइनर प्रेमिस रे हलानी एवं मेजर प्रेमिस रे मध्य हलानी दैट मीन्स इट गोज टू फालासी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल दैट मीन्स आमे जो एज्यूम करथिले जे एटा अफर्मेटिव नबा एटा अफर्मेटिव हबनी वन ऑफ द प्रेमिसेस मस्ट बी नेगेटिव दिस इज द रूल नंबर 2 वन ऑफ द प्रेमिसेस मस्ट बी नेगेटिव देन आई विल गो टू थर्ड रूल इज द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव conclusion must be negative then the conclusion must be negative according to the rules then here conclusion is negative if the conclusion is not negative we will assume it as affirmative conclusion टी हमें affirmative assume करिया if it is affirmative that means both the premise is affirmative this major premise is affirmative and minor premise is affirmative why due to the general syllogistic rule
if both the premise are affirmative, the conclusion must be affirmative. So both the premise are affirmative. We know that affirmative proposition doesn't distribute their predicate, only negative proposition distributed their predicate. That means predicate place रे जो middle term टी अच्छी से distributed हला नहीं. That means only middle term must be distributed at least one. तेणु middle term टी distributed हला नहीं. So here arise the fallacy of undistributed middle. So we cannot assume that it is as affirmative. So the rules 3 conclusion must be negative. So here 1, 2, 3 rules I have proved that major premise must be universal, and second rule one of the premises must be negative, and third rules conclusion must be negative. Thank you. In the next class I will discuss figure 2 special syllogistic rules. Thank you. If you like this video, please subscribe my channel, and thank you.